Hello everyone, I am Dr. Shakti. I am a practicing IBCLC from Delhi. Because India is a very diverse country where with each step our language changes, our cultures change, the way we work changes. And because our work is totally out of the community, we start our work in the community and our work ends in the community. So we wanted to hear from you about your specific challenges, about your specific goals, about your specific cultures in your language, in the language that is close to your heart or in your mother tongue. So we got the voices from all over India. Listen to these voices and enjoy. Hello everyone, I'm Dr. Prachi. I'm a dentist and a clinical researcher and I'm studying advanced lactation professionals from Begin in India. I am from Faridabad, Haryana. Lactation professionals play a very important role in our community. They enable a mother to provide the best form of nutrition to their babies, that is breast milk, liquid gold. Through their knowledge and their skills, they aim to encourage and motivate mothers to have a successful breastfeeding journey for a healthier planet. We all should encourage them and should support breastfeeding. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्राची है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और क्लिनिकल रिसर्चर हूँ और मैं लैक्टेशन प्रोफेशनल की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। लैक्टेशन प्रोफेशनल्स हमारे समाज में एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वो माताओं को, अपने शिशुओं को स्तनपान कराने में सक्षम बनाते हैं। माँ का दूध बच्चे को पूर्ण पोषण देता है। वह माताओं को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, जिससे वे अपने बच्चों को स्तनपान करा सके, जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें उनका साथ देना चाहिए और सभी को स्तनपान के महत्व के बारे में बताना चाहिए। धन्यवाद। பாலூட்டும் திறன் நிபுணர்கள் என் குழந்தைகளுக்கும் மற்றும் பல பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் மிக சிறப்பாக பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இவர்களின் உதவியால் ஒட்டு நாக்கு உள்ள குழந்தைகளுக்கு சிறப்பாகவும் பாதுகாப்பாகவும் என்னால் வைத்தியம் அளிக்க முடிகின்றது. திறமையான பாலூட்டும் திறன் நிபுணர்களின் சேவை இந்நாட்டில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளின் தேவையாக இருக்கின்றது மற்றும் அவர்களின் உரிமையாக இருக்கின்றது. Skilled lactation professionals play a key and vital role in my tongue-tied practice. As soon as a baby is born, next to mother, it is the skilled lactation professionals who are going to help the babies for exclusive breastfeeding, which is the foundation for healthy and wealthy life. Hi everyone, this is Dr. Surabhi, Chief Nutritionist and Lactation Consultant at Nutriwell, Lucknow. I think in today's time, the right lactation practices and guidance is extremely important to feel that special mother-child bond. Breast milk एक कंप्लीट आहार है आपके बच्चे के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और देखिए किस तरीके से आप बेहतर तरीके से अपने बच्चे को फीड करा पाते हैं। Good morning everyone. I am Dr. Sujata Samant, lactation consultant in Pune. I have worked as a nurse and midwife in various hospital settings. Majority of my career was spent in labor room and postnatal wards. So I have seen problems with breastfeeding and then breastfeeding the babies and also for the mothers. So when I started with this journey, I have ensured that the mothers who are coming to my care are exclusively breastfeeding their infants. If it is not possible to breastfeed their babies due to some medical reasons, then they are going for express breast milk, and even if express breast milk is not possible, then in those cases for donor human milk. So I have stopped for my practice. I have stopped encouraging any mother for formula feed, giving formula feeds to the baby, and I feel that is a great thing that I am doing for the babies and the mother. Thank you. नमस्कार, मी डॉक्टर सुजाता सामंत. मी पुण्यामध्ये लॅक्टेशन कन्सल्टंट म्हणून प्रॅक्टिस करते. याच्या आधी मी बऱ्याच हॉस्पिटल्समध्ये एक नर्स आणि मिडवाईफ म्हणून काम केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण डिलिव्हरीनंतरच्या वॉर्डमध्ये किंवा डिलिव्हरी होतानाच्या वॉर्डमध्ये घेऊन काम केलेलं आहे. आणि माझा अनुभव असा होता की बऱ्याच मदर्सना बाळाला दूध पाजणं हे म्हणजे आपलं स्वाभाविक वाटतं, तसं स्वाभाविक नसतं. बऱ्याच जणांना अडचणी येतात. आणि आता मी लॅक्टेशन प्रोफेशनल म्हणून काम करत असताना मी याचं खूप जास्त लक्ष ठेवते की
माझ्याकडे ज्या मदर्स येतात त्यांना मी कधीही फॉर्म्युला फीडिंग सांगत नाही. जोपर्यंत पॉसिबल आहे, ज्या लेवलपर्यंत मला त्यांच्याबरोबर काम करणं पॉसिबल आहे, मी त्यांना आली आणि एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्टफीड करायला प्रमोट करते. आणि आईचं दुधाचं महत्त्व मला माहीत असल्यामुळे मी त्यांनाही ते पटवून देण्याचा प्रयत्न करते. आणि शक्यतो जर शक्य नसेल अगदीच आईचं दूध पाजणं बाळाला, तर आमच्याकडे पुण्यामध्ये डॉक्टर डी.वाय. पाटील हॉस्पिटलला मोठी मिल्क बँक आहे डोनर मदर्सची, तर तिथून आम्ही दूध आणण्यासाठी त्यांना सांगतो. आणि मग तिथून जे काही योग्य प्रकारे प्रोसेसिंग केलेलं दूध असतं ते आईचं दुसऱ्या मातांचं दूध या बाळासाठी उपलब्ध करून देण्याचा माझा प्रयत्न असतो. परंतु शक्यतोवर जिथे शक्य आहे तिथे आम्ही फॉर्म्युला फीड देत नाही. तर मला असं वाटतं की हे खूप चांगलं काम आहे जे आम्ही करतो आहोत, की आईचं दूध हे बाळाला मिळणं आणि त्याच्यामुळे बाळासाठी आणि आईसाठी जे काही त्याचे फायदे असतात ते त्यांना मिळवून देणं. तर मला हे सगळं करताना खूप छान वाटतं आणि आनंद मिळतो याच्यातून. धन्यवाद. नमस्ते, मेरा नाम निकिता जैन है। मैं इंदौर में कार्यरत एक लैक्टेशन काउंसलर हूँ। कहा जाता है कि नारी इस समाज की नींव होती है और बच्चे उसका भविष्य। तो जब एक महिला उस भविष्य को आगे लाने के लिए, संसार में लाने के लिए तैयारी कर रही होती है, एक कुशल लैक्टेशन सपोर्ट बीच की वो कड़ी है जो उसका ये सफ़र आसान बना सकती है। कभी एक शिक्षक बन के, कभी दोस्त बन के, कभी सहायक बन के। इसीलिए मुझे लगता है स्किल्ड लैक्टेशन सपोर्ट इस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। Hello, I am Nikita Jain. I am an Indore-based lactation counselor. So like they say, women is the backbone of the society and the children are its future. So when our women is getting prepared to bring that future, bring children to this world, we as lactation counselor can help them transition to this phase smoothly. Sometimes just like being a friend, like a support, like a teacher or a guide. And that's how I feel skill lactation support is very important for our community. Thank you. नमस्कार, मी ओजस. मी वर्धा इथे स्तनपान सल्लागार म्हणून काम करते आणि आमच्या गावात मी एकमेव स्तनपान सल्लागार असल्यामुळे खूप आयांना माझ्या नॉलेजची मदत होते आणि आत्तापर्यंत मी 150च्या वर आयांना मदत केलेली आहे, विशेषतः पहिल्या 72 तासामध्ये. ह्यामध्ये मला जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये जॉईन झाले तेव्हा लक्षात आलं की स्तनपानाशी निगडीत खूप साऱ्या अंधश्रद्धा असतात किंवा चुकीच्या संकल्पना असतात. सरळ सर्रास सगळ्यांना फॉर्म्युला दूध दिलं जातं आणि आयांना दूधच नाही असं अनेकांना वाटतं. पण याच्याबद्दल आयांशी बोलून बाळांनी कसं पकडायचं ते बघून, बाळांना ज्या काही समस्या आहेत, आईला ज्या काही समस्या आहेत त्या वेळीच ओळखून त्याच्यावरती योग्य तो उपाय करून स्तनपान खूप सुरळीत चालू शकतं हे ह्या ठिकाणी काम करताना लक्षात येतं. त्यासोबत मी ऑनलाईन सुद्धा किंवा टेलिफोनवरती सुद्धा अनेक आयांना मदत केली आहे, करते आहे. आणि विशेषतः ज्या आयांना पुन्हा दूध सुरू करायचं आहे, रिलॅक्टेशनची प्रोसेस करायची किंवा दत्तक मुलाला स्तनपान करायचं आहे, अशा आयांना मी आत्तापर्यंत मदत करते आहे आणि त्यांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. आणि आई आणि मुलाचं एक विशेष नातं ह्या निमित्ताने पुन्हा एकदा निर्माण होतं आहे, याचा मला खूप आनंद होतो. Everyone, my name is Ojas. I work as advanced certified lactation practitioners in Wardha. Wardha is a small town where I'm the only lactation practitioner as of now. This has helped the community in a really good way. There are like more than 150 mothers who I have helped, especially in first 72 hours. And more than that, there are many mothers who come later in few months to get help for their like smooth breastfeeding journeys. And I'm happy to inform you that there are so many mothers who have gone for exclusive breastfeeding journey. There were so many misconceptions and misunderstandings and superstitions related to early breastfeeding. There was formula given to mothers like left, right and center. In my hospital at least, you see, like the formula is not given unless there is absolute SOS, which comes like one case in hundreds. So I think this has become very good help for the community, I feel. And thanks to
to begin ed to have helped me achieving this knowledge. Second thing is I also do online help for mothers who want to undergo relactation and adoptive breastfeeding. So so far as of now around 10 to 15 mothers I've helped in these circumstances for relactate and adoptive breastfeeding, and they have shown a very good results and they're very happy to be reconnected with the child in a very special way. That's for now. Thank you. नमस्कार, म्हजें नांव पृथा पै पाणंदेकर. आय एम अ ब्रेस्ट फिडींग कावन्सिलर एंड अ लॅक्टेशन कन्सल्टंट. हांव गोंया मडगांव हांगा रावतां. ब्रेस्ट फिडींग हें म्हज्या कोतान खूब गरजेचें, ताकाच लागून हांवें हो कोर्स केलो. आजकाल आमी पळयता की खूब आवयो ज्यो गोंयान आसा स्पेशली तांकां ब्रेस्ट फिडिंगा खातीर सपोर्ट खूब कमी आसा. ह्याच कारणाक लागून खुबशे आवयो आपले भुरग्यांक एक्सक्लुझिवली ब्रेस्ट फीड करपाक पावना. तुजें दूध पावना, भुरगें रडटा, ताका दूध जाय आनी तूं हें करपाची केपेबिलिटी तुज्या भितर ना, हें आमी आमच्या आवयांक कंटिन्युअसली सांगत आसता. आनी हाकाच लागून आमच्यो आवयो डिमॉरलायज जाता आनी आपल्या भुरग्याक आपलें स्तनपान करपाक पावना. आजकालच्या काळान जेन्ना कोविडाचें सिच्युएशन चलिल्लें आसा त्या वेळार आमी सदांच आयकता की आमची इम्युनिटी बरी आसूंक जाय. आवयच्या दुधा पेक्षा ह्या जगान आनी कांयच इतलें पौश्टीक ना जें आमकां खंयचेय दुयेंसा कडल्यान खुबशें प्रोटेक्शन दिवपाक शकता. आवयच्या दुधान सगळे विटमिन्स, मिनरल्स, तुजे प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स जे भुरग्याक गरज आसता ते सगळे ते भुरग्याचे निड्साच्या प्रमाणे उपलब्ध आसता. ते आमी त्या भुरग्या कडल्यान, त्या आवय कडल्यान ओडून काडटा, तांच्या कडल्यान पयस करता आनी दुसरे कितेंय दिवपा खातीर म्हणजे फॉर्मुला दिवपा खातीर एनकरेज करता. हें अशें जावचें न्ही आमच्या गोंयान म्हणून हांवें हो कोर्स केलो. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की समज तुमकां ब्रेस्ट फिडिंगा खातीर ते वीच इज स्तनपान करपा खातीर तुमकां समज मदत मेळना जाल्यार म्हजे भशेन लोक आसा जे तुमची मदत करूंक शकता आनी तुमकां सारकी वाट दाखोवपाक शकता. आमचे कडेन येवचें, आमचो लाभ घेवचो अशें हांव तुमकां सांगतां. धन्यवाद. Hello, good afternoon everyone. I am Dr. Shakti. I am a native of Kanpur, Uttar Pradesh, and I am a pediatrician and an IBCLC. Skill lactation support is very crucial for any community because skill lactation support bridges the gap between recommendations for breastfeeding and the actual practices of breastfeeding. We all know that mothers often resort to bottle feeding or formula feeding when they face challenges and they are not able to get any proper and timely help. So if all the mothers, all the families have access to skill lactation support, our breastfeeding rates are going to go up and mothers will be encouraged to breastfeeding. Thank you. प्रशिक्षित स्तनपान सलाह का बहुत महत्व है एक समाज में, क्योंकि जब माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं तो अक्सर शुरू के दिनों में उनको कुछ छोटी छोटी परेशानियां आती हैं या कई बार उनको कई ऐसी बातें उनके आसपास के लोगों से पता चलती हैं जो ठीक नहीं होती, जो सिर्फ अंधविश्वास है या जो गलत विश्वास है. इस तरह के समय में जो प्रशिक्षित स्तनपान सलाहकार हैं या काउंसलर्स हैं वो माँ की मदद करते हैं जानने में कि क्या सही है, क्या गलत है, उनकी परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करते हैं और जिस तरह की भी परिस्थितियों में वो हैं उन परिस्थिति के हिसाब से उनको किस तरह से आगे बढ़ना है इसमें मदद करते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्तनपान, जो लोग स्तनपान करा रहे हैं वो बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को माँ का दूध मिले, तो हमको प्रशिक्षित स्तनपान सलाहकारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. धन्यवाद. Namaste, my name is Srikanti Bodapati. I'm a nutritionist and public health specialist currently living in Gujarat. Breastfeeding provides every child the best start in life.
providing breastfeeding within 1 hour and exclusive breastfeeding for 6 months enables families and children potential growth and development. Skill lactation support enables the families in addressing the physical issues as well as supports them in counseling them in their mental, emotional barriers related to breastfeeding. This helps in the long way in reducing the early neonatal mortality as well as infant mortality rates in the country. Thank you. నమస్కారం, నా పేరు శ్రీకాంతి బోడపాటి. నేను ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ మరియు పబ్లిక్ హెల్త్ స్పెషలిస్ట్ గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంటున్నాను. పుట్టిన ప్రతి శిశువుకి తల్లిపాలు లభించడం వారి జీవితంలో ఎంతో శుభప్రారంభాన్ని ఇస్తుంది. తల్లికి వారి కుటుంబాలకి ఈ నైపుణ్యతతో కూడిన ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, లాక్టేషన్ కన్సల్టెంట్స్ వారికి తల్లిపాలు ఇవ్వడంలో వచ్చిన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడానికి ఎంతో సహకరిస్తున్నారు. వారి యొక్క శారీరక మానసిక ఆందోళనలను నివారించి వారికి పాలు సమృద్ధిగా వచ్చేలా సహకరించి ఈ విధంగా నవజాత శిశు మరణాలు అరికట్టడంలో దేశానికి ఎంతో ఉపయోగకరం అని నేను భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Hello everyone, I am Subina Mohan, basically from Haryana, currently residing in Navi Mumbai. Lactation support plays an important role in the community from which I belong to, which is agriculturist. People tend to ignore the nourishment of the colostrum which should be given to the newly born baby right after the birth. They tend to practice old traditional ways of giving honey, sugar to the baby, which is not at all acceptable. A baby is given breast milk for initial few weeks and they start with cow's milk. So many such practices are there which is harming the nourishment of the baby and the babies are turning to be malnutrition. A lactation support provided in these areas would cherish the nourishment and the bond between the mom and the baby. With the guidance of lactation support, we can together create a better tomorrow. Thank you. Namaste. मैं सुबीना मोहन हरियाणा से अभी रहती नवी मुंबई में हूँ. स्तनपान एक शिशु के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें ही सबसे ज़्यादा पोषण है. मैं जिस समुदाय से बिलोंग करती हूँ वो एक ज़मींदार समुदाय है. वहाँ की औरतें और वहाँ के लोग ज़्यादातर बच्चे को गाय का दूध प्रदान करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग खेतों में काम करते हैं. इस वजह से मैं माँओं को ये शिक्षित करना चाहती हूँ कि बच्चे को जन्म से 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपना दूध दें और जन्म से 12 महीने तक कोई भी जानवर का दूध ना दें. मैं लैक्टेशन सपोर्ट की मदद से लोगों में को ये जागरूक करना चाहती हूँ कि दूध का भंडारण कैसे करें, साफ़ सफाई कैसे रखें ताकि जब वो ना रहें तो माँ के दूध को कैसे पिला सकते हैं. मैं लैक्टेशन की सपोर्ट से आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना चाहती हूँ. धन्यवाद. Hello, I am Varsha Hariharan, a lactation professional from Doha, Qatar. For me, breastfeeding is not just about milk. It's all about the future growth of a healthy generation, the love and affection between the mother and the baby. Being a lactation professional, I have many roles with my mothers, but out of all, the most important way to impact the society is to help them be confident in their own magical power of being a mother. By doing this, I'm not only supporting her, but I'm supporting my country towards the path of optimum development. હાય, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ યાશિકા ભાવસાર છે અને હું વડોદરા ગુજરાતમાં રહું છું. હું એક લેક્ટેશન પ્રોફેશનલ છું. લેક્ટેશન પ્રોફેશનલ બેસિકલી બ્રેસ્ટ ફીડિંગ રિલેટેડના જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ રિલેટેડ કાઉન્સેલિંગ કરતા હોય છે ફેમિલીઝને. આ કાઉન્સેલિંગ ખાલી બાળકનો જન્મ થાય ત્યારથી નથી હોતું, પણ પ્રેગ્નન્ટ હોય જ્યારે માતા ત્યારથી લઈને બાળકનો જન્મ અને પહેલાં થોડા વર્ષ એટલે 1-2 વર્ષ સુધીમાં આની બહુ જ મહત્વતા છે. બ્રેસ્ટ ફીડિંગ અગર પહેલેથી વ્યવસ્થિત રીતે હોય અને બાળકને પ્રોપર બ્રેસ્ટ ફીડિંગ થ્રુ ન્યુટ્રિશન મળે તો બાળકનું જીવન સરળ બને છે, સુખમય બને છે અને ન્યુટ્રિશન પ્રોપર એને મળી રહે છે. તો એના માટે અમે લોકો કામ કરી રહ્યા છે. કોવિડ સિચ્યુએશનમાં પણ બ્રેસ્ટ ફીડિંગનું એટલું જ મહત્ત્વ છે જેવી નોર્મલ સિચ્યુએશનમાં હોય છે. એટલે કોરોના વાયરસ છે છતાં તેમાં પણ અમે ખૂબ બધી કમ્યુનિટીને
હેલ્પ કરી રહ્યા છે અને આ હેલ્પથી એક કમ્યુનિટી બિલ્ડઅપ થાય છે, એક સમુદાય બિલ્ડ થાય છે એન્ડ ફેમિલીઝમાં હેપીનેસ હોપનું સ્પ્રેડ થાય છે. સો આ જ મારું વર્ક છે એઝ લેક્ટેશન પ્રોફેશનલ. થેન્ક યુ. Hello, hi, my name is Yashika Bhavsar. I am from Vadodara, Gujarat. I am a lactation professional and I'm having 6+ years of experience with a personal experience of lactation. Lactation counseling is really close to my heart and I have interest in it since so long. What a lactation professional does is they help the family for effective breastfeeding to new or first time mothers. Breastfeeding is very beautiful, but sometimes if there is lack of knowledge or technique, it can be painful and can also have adverse effect if discontinued into the child. We work with the families not only after childbirth, but our work starts from pregnancy to childbirth to the initial years of the child's life. Proper nutrition during the first few years of a child's life is very important and it also includes proper breastfeeding. With this profession, what we are doing is we are building a community, we are building a hope, we are giving a healthy start to the baby. Even though there is a COVID situation, the breastfeeding technique and the breastfeeding remains the same as in the normal situation, and thus we help the families to